Welcome everyone. Today we will start the bioinorganic lecture on the topic of metalloporphyrins. This is basically an introductory class. We will discuss about the metalloporphyrins. What is metalloporphyrins? So first of all, let's discuss about the bioinorganic chemistry. Actually, bioinorganic chemistry is a relatively a new field. So this is a still growing and interdisciplinary field which have so many new things to discover. अगर हम मेटालोपोरफायरिन्स के बारे में बात करें तो मेटालोपोरफायरिन्स वन काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स दिस इज कॉल्ड मेटालोपोरफायरिन्स मतलब ये जो पोरफायरिन रिंग है इसके साथ अगर मेटल कनेक्टेड है तो इसको बोलते हैं मेटालोपोरफायरिन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द लिगेंड इज पोरफिन. तो इस लिगेंड में अगर ये if we substitute all these positions it will convert to the porphyrin, and if we attach the metal it is called metalloporphyrins. It is like that. और ये जो मेटालोपोरफायरिन्स वो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, मायोग्लोबिन में और क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है. सो हीमोग्लोबिन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड myoglobin will store oxygen and chlorophyll do the photosynthesis. This porphyrin, this is called porphyrin, and if we substitute ligand in this position like this, we substitute by ligand, this is called a porphyrin, and this is actually a derivative. This is derivative of porphyrin. So actually there are four pyrrole ring. They are connected by this CH group. So सिंथेसिस के बारे में बात करें तो आप पहले पीरोल लेंगे in H, this is 4 mole plus pH COH, and in presence of acid it will generate the porphyrin ring, but that is substituted porphyrin, basically porphyrin ring, and this will generate the tetraphenyl derivative, which is also called TDP. Tetraphenyl derivative means this in, and it is connected to this in this 5-member ring. Here is another 5-member ring, here is another 5-member ring, CH2 and CH2, and it is like that, but here the pH will be substituted here. So this is easy and stable method for synthesis of this substituted porphyrin. Now this metalloporphyrins, this porphyrin ring can act as a proton donor and as well as a proton acceptor. In presence of metal ion, it will release their proton, and this two proton will be released, and it will produce negative charge, and negative charge both will bind to this metal. So it is donating the proton and acts as an acid. On the other hand, it can accept the proton also, and then it can act as a base. In this planar conjugated system, all the pi bonds are delocalized, so it is more rigid than the crown ether system. We know that crown ether look like this oxygen, and this like this ligand. So this kind of ligand, they are more rigid. These porphyrins are more rigid in comparison to the crown ether, and these porphyrin ligands are very selective for the metal ion. So basically nickel has higher binding tendency to the porphyrin in comparison to iron, because nickel being nickel 2 plus very small size, so it will easily fit the cavity of the porphyrin ring. So if the metal is nickel, that is form very stable complex. So actually this will be present in hemoglobin, and whole unit is called heme. This is Fe protoporphyrin 9,
This is called hem. और एक चीज़ जो है, अगर मेटल का साइज बहुत बड़ा होता है तो ये जो कैविटी है इसमें फिट नहीं होता, सो मेटल थोड़ा स्क्वायर प्लेन से थोड़ा ऊपर रहता है. इफ आई कैन एक्सप्लेन लाइक दिस, तो आयरन के सिनारियो में ये जो होता है कि ये आयरन थोड़ा ऊपर रहता है क्योंकि आयरन का साइज बड़ा है, so it can't fit in the porphyrin cavity. So that's how the iron will exist in the deoxy form. So हम लोग जो पढ़ा उसका जिस्ट के बारे में अगर बात करें बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, दिस इज अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ केमिस्ट्री and studied the role of metal ion in the living system, and this is a relatively new and growing field in chemistry. So metalloporphyrin का definition है complex in which the metal ion is coordinated to the 4 nitrogen atom inside the cavity of porphyrin ring, that is called metalloporphyrin. Geometry की अगर बात करें तो square planar होता है basically, and axial site, metalloporphyrin का axial site available for the other ligand to come because 4 nitrogen will occupy 4 square planar position. और एग्जाम्पल में है hemoglobin, myoglobin, cytochromes and chlorophyll. Now porphyrins derived from the porphyrin basically. A structure of porphyrin. So 4 pyrrole ring are connected to each other by this CH bridge or methylidine unit. This is basic porphyrin unit. अगर इधर नंबरिंग पोजिशंस के बात करें तो 5, 10, 15, 20, this methylidine position 10, 15, 5 and 20, this are called meso position. और ग्रीक में बोलते हैं अल्फा बीटा गामा डेल पोजिशंस. सो ऑलरेडी डिस्कस प्रीवियसली दैट टेट्राफिनाइल जो पोर्फाइरिन रिंग है वो रेडिली अवेलेबल एंड इजी टू सिंथेसाइज एंड प्यूरिफिकेशन, दैट्स व्हाई यू कैन इजीली सिंथेसाइज देम. So basically in this ring the 4 phenyls are substituted in this position, this alpha beta gamma del position. So 4 phenyls are substituted. The acid base behavior already said that it can accept 2 proton, and porphyrin it can accept dication, and it can donate to 2 proton, it will convert it to dianion. So in the metalloporphyrins 2 inner hydrogens are present and they are replaced by metal 2 plus और डाई पॉजिटिव आयन. सो लिगेंड चार्ज तब होगा -2. सो मेटल आयन साइज इफेक्ट में के बारे में अगर बात करें तो मेटल निकल जो 2 प्लस है वो बहुत छोटा होता है, सो रिंग रफल्स हो जाता है एंड इट कैन फिक्स वेरी परफेक्टली एंड जनरली जनरेटेड द स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री. अगर मेटल बहुत बड़ा होता है तो वो स्ट्रेस अबव और बिलो होता है, वो प्लेन में फिट नहीं होता, देन इट विल शो डोम शेप्ड. स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो ये प्लानर होता है, कंजुगेटेड पाई सिस्टम होता है. अराउंड द पेरीमीटर द पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेशन टेक्स प्लेस व्हिच विल प्रोवाइड द रिजिडिटी इन द रिंग. सो दिस रिंग इज मोर रिजिड देन द क्राउन ईथर and more selective for the certain metal. And structure already told that porphyrin, and this is without metal, sorry. So porphyrin में 4 पिरोल रिंग जुड़ के ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है. उसके बाद मेटलोपोरफायरिन में मेटल इंसर्ट हो जाता है and after that Fe protoporphyrin, the structure is like this and it is also called hem. Okay, so this is basic introductory class of bioinorganic chemistry. Thank you for watching the video.